Just a minute. Let me adjust that. Okay, guys, can you hear me now? There was some technical problem. I don't know whether you are able to hear me or not. So, if you can listen to my voice, so please respond. And we are going to start again. And sorry for all the inconvenience that might have caused you. So, let the other people join because I shared that link in some of my English speaking groups, and I don't know whether they are still trying to get connected to the previous video, the previous link that I shared. So I haven't shared this link, so I'll definitely do that. So once people let me know whether the things are going okay, they are able to hear, so then I will go and talk about different things. So whosoever has joined, please let me know if I am audible. If you are able to hear, so you can type that. You can write that in a comment section there. So that will make me aware of that. So can you hear me? Am I audible? So it's almost quarter to 11. So this session is going to go for half an hour, or if I enjoy and you people enjoy the session, then we'll go and exceed the time. Yes, sir, you are audible. Thanks, Keshav, for telling me that. So, first thing first, I believe you all are here to enhance your communication skills. So rather than talking about things from different segment or from different genre or something, so we'll stick to the topic, and that the topic in hand is how to enhance our communication skills, including our pronunciation. I always pay a lot of attention on our pronunciation. As I said earlier, pronunciation is key. It is going to create an impression, and whenever you listen to anybody speaking Hindi, so if you think that that person is not able to pronounce words correctly, so what kind of impression do you create, or what kind of impression does that person create in your mind? What do you think about that person? Somewhere down the line you start thinking that, okay, this person doesn't know how to speak English, so sorry, Hindi. So same is with English. When you know the right pronunciation, so then it is amazing. A lot of people understands, sorry, a lot of people understand what you want to convey. And some people might say that there is no way. Why is there anything at all? Why is there anything at all? I don't know what you mean by that. Okay, let's continue. We are talking about how to enhance our communication skills. You might have gone through so many videos, and there are so many things that are going on in your head, and sometime you are able, why does universe exist? Okay, I'm not the right person, or I'm not that much qualified to answer this question. So I am just talking about some of the things which can help you to enhance your communication skills. If you really want to know the existence of this universe, you had better go to some of the other channels which are meant for answering these questions. So sorry for disappointing you. Yes, so let's go ahead and talk about other things. So if you all are able to hear me, and you are able to understand, so please let me know. And if you want me to talk about few things which you want the other person to listen to that also, so you can write in the comment section. We'll definitely talk about those things. And please write only those questions which are going to help you and others also. And I'm not saying that I'm the only one who knows everything. So whatever the little knowledge that I possess, I try to impart that knowledge, and which helps me in learning, or in my journey of learning English also. I always consider myself a student of this language, because if I consider myself a student, I would definitely go ahead and learn a lot of other things. So that's why I always tell my students also that I am still a learner, because learning is something that should go for a longer period of time. As long as you want to stick to one particular thing, so you should read that.
It is not about one thing that you need to go through. Whatever the subject that you are interested in, or if something intrigues you, so you should go ahead and read about that, because knowledge is always appreciated. Yes, in the other live before this, because the connection wasn't that much good when I was on the terrace, I was talking about adjectives. So this video is not going to be a grammar lesson only. So whatever that I might speak, if there is something that is worth discussing, so I will not shy away from discussing that. I would definitely talk about that. But please remember that I'm not going to talk at length. So I will make it short and crisp so that it is easy to digest. Yes, so how many of you think that pronunciation is important for a learner of English or for every speaker? Please let me know in the comment section. And how many of you are working on your pronunciation, and what are the things that you follow? If there is any pattern that you have been following, so please let me know about that also. So is there something, or is there some of the exercises or some of the things that you do at home to enhance your pronunciation? So please let me know about that. And good evening to all, because I forgot to talk about that. So I hope you all are doing good. It's a Saturday night, and I know a lot of people might be busy in partying or going out. So whosoever has joined, so please make sure that you will like the video and you will share it among your friends. Yes, I asked a question regarding pronunciation, so please let me know if you think that pronunciation is very important. Because nowadays people do not want to learn grammar, because I have seen so many students and some other people also. Yes, it plays a significant role in learning English. Yes, I couldn't agree more. So, this is a phrase, I couldn't agree more. When you show your agreement, a strong agreement, you can say that I couldn't agree more. So, yes, so the significance of learning pronunciation is like known to all. Everybody wants to enhance their pronunciation. I have heard so many people from different parts of the country, because I have been making some of the videos. I'm not saying that I make videos or upload videos every now and then. Hello back there. Yes. Hello Pankaj. So there was some technical problem. I think the connection wasn't good because I was not able to get my Wi-Fi signals on the terrace. So I thought, let's get back to the same place where I make most of the videos or I go live from. Yes, I'm talking about pronunciation today. I wanted to know from you guys, because before you joined, I asked people about the importance of pronunciation. And how many of you think that learning pronunciation is must for every learner? If it is the case, so please let me know. And I have been following few things which I will share with you, which might help you. So I do a lot of crazy stuff when it comes to learning English. So I'll discuss that also. So please let me know, what do you do to improve or enhance your English language or your communication skills? Is there something important? Yes, sir, pronouncing words correctly is also important. But the question, the $1,000,000 question is that how would I get to know, or how would I know whether I am pronouncing that specific word correctly, or am I making an error while pronouncing that specific word? So how would you get to know about your pronunciation? So whenever you practice, does this thing come in your head that yes, sir, English is just a body, but the pronunciation is the beauty of the body. Yes, and when you have good thoughts, or when you are able to relate, or you have that creative thinking, so it becomes soul. Creative thinking is soul, beauty is pronunciation, and the rest of the things can be called the body.
So we have created the whole structure here. Because sometime I have also seen that people are not able to be creative when it comes to speaking English and writing also. But there is a difference between writing and speaking. When you write, you have that time, you can think and write. But at the time of speaking, you have to speak on your feet. On your feet, in the sense, at the same time. You don't get time to think. So sometime you have to speak what comes, or whatever the ideas that you get. And it is also important to correlate whatever that you are saying, because whenever you are given any kind of topic or you are talking about one specific thing, so a lot of people simply go here and there. So it's very difficult to hit the road, or it's very difficult to talk about the things in a straight way, because people start talking about anything out of the box, which is not something that they should discuss. I have helped some people to crack their interviews also. So whenever they go for appearing in any kind of interview, so they always find themselves tongue tied. They know what to say, but at the time of speaking, because you know that there is a lot of pressure, because the word interview itself gives you a lot of pressure. So a lot of people tend to forget. So they are bound to forget. No, bound is not the right word here. So when I was learning pronunciation, I told you in the previous live that I used to record using a Walkman, because at that time things were not that much common. And nowadays, everything is at your fingertips. You have a mobile phone. Everybody carries a mobile phone in their pocket. So it becomes quite convenient at times. Not at times, all the time. But it is also distracting at the same time. A lot of people think that, okay, I would be able to read certain stuff, or I would listen to a lot of podcasts, or a lot of listening material. So the more they listen to it, the more they get to know about things. So the more complex things become at the end, because you should have a very limited subjects in your hand. Very meaning depends है क्या, मैथमेटिक्स अड्डा, very meaning depend है क्या. Okay, I think you are talking about VARY, very different. Is it depend or different? I'm not able to understand. I think you want me to tell you the meaning of vary. VARY, vary matlab changing. Like a lot of people vary their statements. वो अपनी statements को बार बार बदलते हैं. सो इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर. एक इंसान से दूसरे इंसान पर सोच अलग अलग होती है. सो वी आर वेरी, इट इज़ एन इंटेंसिफायर. Like it's a very important question. So VERY, very important. But very is a verb. Vary, VARY. इससे आप verb मान सकते हैं, तो very. तो I believe you are able to understand, और मुझे समझ नहीं आया, because whatever that you have written, I'm not able to figure out. So whatever that I understood from your question, so I have just answered. I think varieties come from very, yes, and variety and various also. So there are many more words, because it varies, different. So Pankaj, you are also a learner of English, I think. So what are the things that you mostly find difficult in order to understand, in order to speak in front of others? So is it like, do you find yourself in a fix? In a fix matlab hota hai in trouble when you are talking to people face to face. Because talking at home and talking to friends, sometimes it is quite easy. It's just like a cakewalk. But talking to strangers, or the people, those who know better than us, it becomes difficult at times, isn't it? So isn't it difficult? Because earlier I used to face a lot of problems, but now I have been speaking for a very long time, so I find it quite easy. But when somebody speaks far better than me, then I start listening to that person. Thank you, sir, for mentioning my name first for all. Okay.
Pleasure. Are you from English environment background like school? Mathematics adda, let me disappoint you here. I was from a government school and I started learning English when I was in 6th standard. तो 6th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक बुक थी जिसमें अल्फ़ाबेट्स होते थे, ए से लेके जेड तक. उसके बाद हमारा लेसन शुरू होता था, दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ और दैट इज़ अ बॉक्स. अब मैथमेटिक्स, सॉरी, अड्डा जो भी है आपका नाम, तो मैं आपको बता दूं कि अगर 6 में इंग्लिश मिली तो इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को अगर 6 में इंग्लिश मिल गई है तो वो वहीं से पढ़ना शुरू कर देता है. नो, आई वॉज रियली बैड एट दिस. मेरी इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. लॉट ऑफ पीपल आपने देखा होगा वो यही बोलते हैं कि नहीं यार मेरी जर्नी बहुत मुश्किल रही, पहले चीज़ें बहुत मुश्किल थी, एकदम से मैंने ये किया वो किया. नो, आई एम नॉट मिन्सिंग माई वर्ड्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू what I went through. So I am from a government school. मैं एक ऐसे घर से आता हूँ where I am the only graduate. उसके बाद अब है, yes sir, when it comes to some words which are new for me then I am in a fix. Yes, it is with everyone. तो हिंदी बैकग्राउंड से होना यार बड़ा मुश्किल सा काम है. तो चीज़ें एकदम से स्पॉन्टेनियस नहीं आती. व्हेन यू वांट टू स्पीक तो एकदम से क्लिक नहीं होती हैं चीज़ें. कि मैं बड़ा पहाड़ों से शहर के सामने से स्कूल जाता था. यस यस यस. वाओ, आई कांट बिलीव दैट. वाओ, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, लाइक प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग. यार प्रोनाउंसिएशन का समझ नहीं आया, मैं तो बस अजीब अजीब हरकतें करता था. आई यूज़ टू लिसन टू डिफरेंट रेडियोज़, क्योंकि रेडियोज़ ज़्यादा कॉमन थे. और रेडियो इंडियन नहीं, जैसे कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ एप्लीकेशंस होते थे जिससे आप ब्रिटिश रेडियोज़ और ब्रिटिश बीबीसी न्यूज़ चैनल आता है एक, अभी भी आता ही है, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट. तो मैं उनको सुनता रहता था. अर्लियर दैट यूज़ टू गो बियॉन्ड माई हेड. आई बेट यू हैव वॉच्ड मूवीज़ फॉर समथिंग लाइक दैट. हाँ, मैंने मूवीज़ बहुत देखी, बट मूवीज़ का एक पंगा ये था कि अब जैसे कि सबटाइटल्स आते हैं व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी, सो यू नो सबटाइटल्स आते हैं. बट जब मैं देखता था, क्योंकि मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, से 15-16 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए. अब व्हेन यू आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड यू हैव बिन टीचिंग फॉर मोर देन 16 ईयर्स और 15 ईयर्स, तो अब इंग्लिश सीख के ही आप टीचर बनते हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो कैसे भी बन जाते हैं. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि आजकल हर चौथा बंदा इंग्लिश पढ़ा रहा है. और कई सारे उन चौथे बंदों में से मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कई बार कि भैया ज़रा बताना इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, और वो दुनिया को पढ़ा रहे होते हैं कि इंग्लिश कैसे बोलनी है. तो क्वाइट फ़नी. तो चलो उसके बारे में बात नहीं करते. तो बड़ा अजीब सा लगता था कि अब कुछ चीज़ें तो समझ ही नहीं आती थी. आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग दिल्ली बुक फेयर, इज़ इट लास्ट डे टुमारो? अरे यार, आई wasn't aware of that because some of my students went there and today I got to know about that, so it would not be that much possible for me to go to book fair, but I will try tomorrow. देखते हैं. Your accent and शशि थरूर quite similar है यार. शशि थरूर से compare मत करो, because शशि थरूर has a very, like, he is from a very next level. तो अगर आपने ये बोला है, सो इट्स जस्ट लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. बट आई विल ट्राई मैं कि 2, 4, 5, 10% भी उनके जैसा हो जाऊँ, सो आई वुड बी. जस्ट अ मिनट गाइज, कैन यू हेयर मी नाउ? बिकॉज मैंने गलत माइक को मतलब चार्जिंग पे लगा रखा था, सो बेचारे की मुंडी उड़ गई या क्या उड़ गया, आई डोंट नो अबाउट दैट. सो आई बिलीव यू आर एबल टू हियर नाउ. So there would be a lot of background noise. So I think you can bear that. So is it okay now? Because I know that the sound would be coming. So I'm not very familiar with these kind of technical things or these technical gadgets. Mute. Mathematics, can you hear me? Okay.
ऑलराइट, सो बात कर रहे थे हम प्रोनाउंसिएशन की। थोड़ा हिंदी भी मेरे को पसंद है बोलना, तो प्लीज़ यू कैन बेयर दैट। वॉइस नॉट क्लियर सर, योर वॉइस, वीडियो नॉट क्लियर, वॉइस सर, वॉइस ऑडिबल, वीडियो क्लियर नहीं है। एक तो समझ नहीं आ रहा है, इतना अच्छा कनेक्शन लिया है, बट स्टिल। मोहम्मद अरजलान, सो इज़ इट द सेम थिंग विद एवरी वन? आप सबको भी वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है? इज़ एनी प्रॉब्लम विद द वीडियो ऑल्सो? बोथ आर ओके, ओके, थैंक गॉड, बिकॉज आज पता नहीं सैटरडे है तो कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। सो इट्स ओके, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू हियर एंड सी, सो आई थिंक इट्स ओके, इट्स फाइन। नेक्स्ट टाइम आई टेक केयर ऑफ दैट सर। मैं सर इंडिया से बाहर, हाँ, इसलिए मैं भी दिस प्रॉब्लम। ओके, माइट बी दैट इज़ अ प्रॉब्लम देयर सर, प्लीज़ एक्सप्लेन प्रेजेंट परफेक्ट। Yes, I'll definitely talk about that. Whenever I try to speak in English, my friends start tolerating me. Yeah, it's okay. Deadpool, it's okay. Because when I used to speak English, जब तुम 15-16 साल पहले चले जाओ, तब तो मैं पढ़ाना शुरू किया था, और उससे पहले I was working in some of the top multinational companies. So I was working with some of the companies. So उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल था। उस टाइम टॉलरेट की जहाँ तक बात है, पीपल वर टोटली डिफरेंट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जहाँ तक बात है, अभी हम बात करेंगे उसमें, बिकॉज अर्लियर जितने भी मेरे लाइव सेशंस रहे हैं उसमें भी मैंने उनकी बात की है। और जल्दी ही आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोज़ फ्रॉम माई क्लासरूम। ओके, लॉट ऑफ पीपल वॉन्ट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन ग्रामर एंड सम अदर थिंग्स, बिकॉज हेयर वी कैन टॉक डायरेक्टली। आई रियली लव टू टॉक टू पीपल डायरेक्टली। तो बात उस टाइम की कर रहा हूँ, तो घर में एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न, ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स, or ex-sister who really wanted to watch all those daily soaps जो आती है ना, कौन सी लेडी है, like the lady is there who makes these kind of daily soaps, Kapoor, Ekta Kapoor. So my sister wanted to watch your graduation background. अरे यार, I'm simple history honors graduate. I'm from Hindi medium. So after graduation, I started paying attention on this language. Yeah, Ekta Kapoor. So my sister wanted to watch all those programs. So around 12 o'clock, I used to get my quota of time. And at that time, everybody wanted to sleep. And I was from a family where we had only one like room that was 25 गज का जो होता है ना, 25 स्क्वायर यार्ड या जो भी होगा, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो उस छोटे से कमरे में रहना और एक टेलीविज़न, और एवरीबडी वांटेड टू गो टू बेड एंड नोबडी वांटेड मी टू टर्न द लाइट ऑन। सो आई यूज्ड टू वेट। सर इंग्लिश जो पीएचडी करते हैं क्या करते हैं, मीन क्या पढ़ाते हैं पीएचडी में? अरे पीएचडी इज़ लाइक डॉक्टरेट इन फिलोसफी। सो दे विल टीच यू डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज में कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें आपको मतलब मास्टर से भी ऊपर जाके आपको डॉक्टरेट करनी होती है। उसमें कुछ रिसर्च वर्क होता है उस चीज़ के अंदर, कि आपने क्या रिसर्च, ऐसे आप शेक्सपियर पे कर रहे हैं, किसी और पे कर रहे हैं, बहुत सारे और भी राइटर्स हैं, पोइट हैं, प्लेइस्ट हैं, तो उन सब पे आपको करना होता है। तो 4 से 5 साल या जो भी आपको टाइम लगता है, एक प्रोफेसर के अंडर यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड यू हैव टू पब्लिश योर वर्क। एंड उसके बाद आपको एक डिग्री यूजीसी की तरफ से मिलती है, जो पीएचडी की डिग्री है। तो पीएचडी मिलने के बाद यू कैन डायरेक्टली मतलब उसके बाद आपको मेरे ख्याल से नेट का एग्ज़ाम तो देना ही होता है, हाँ। तो उसके बाद आप प्रोफेसर लग सकते हैं। लेक्चरर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेक्चरर्स आर ओनली नेट क्वालिफाइड, और जो प्रोफेसर्स होते हैं दे आर पीएचडी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो हाय किशोर। तो एकता कपूर की बात हो रही थी, तो ये सब सीरियल्स वगैरह लाइक माई सिस्टर यूज टू वॉच। घर में देयर वाज नो एनी काइंड ऑफ एटमोसफेयर, जैसे माहौल होता है इंग्लिश का। सो आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स ऑनलाइन। यू नो, आई डोंट होना चाहिए वैसे, आई डजंट इवन नो जी ऑफ ग्रामर एंड आई एम preparing for SSC CGL, yet I am getting good marks in English just by watching movies. Now I know जो होता है अच्छे के लिए होता है यार। That's good for you. How long does this session last, sir? I don't know, might be 15 or 20 minutes or half an hour more. And 11:30 I would definitely go back because I have to eat something. I'm not feeling hungry right now. So Prachi Sahu, hi, hello.
तो I was talking about that time. How are you? I'm not fully fit because like I have cold and a bit fever also, and I've got a sore throat. But I'm okay. I'm able to, as long as I'm speaking in English, I don't feel like that. क्वेश्चन टैग्स क्या होता है? क्वेश्चन टैग्स एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होता। जैसे आप मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं, सो उसमें भी एक प्राइस टैग होता है। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन टैग, मतलब एक क्वेश्चन जैसा सेंस, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, मुझे क्रिकेट पसंद है ना, तो जो भी आप ना लगा रहे हैं ना, तो ये एक क्वेश्चन का सेंस होता है जो एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के पीछे लगाया जाता है। जैसे यू लाइक क्रिकेट, डोंट यू। अब यू लाइक क्रिकेट, डोंट यू, सो यू लाइक क्या है? प्रेजेंट सिंपल है, तो आगे आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एक कॉन्ट्रैक्शन लगाना होता है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। सो सपना, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन टैग्स इस तरह से होते हैं। आई कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग। नेगेटिव अगर आपकी स्टेटमेंट है तो एक इंटेरोगेटिव टैग आएगा, जैसे कि आई एम नॉट इन जो, लाइक आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, एम आई? I am not eating anything, am I? I am eating something, ain't I? So am I not? तो उनको हम कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है कि जब आप एक am और not को जोड़ते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बना लेते हैं? सिक और इल। कन्फ्यूज़ होता है, अरे यार थोड़ा सा इनके बीच में भी रहता है। इल जो है वो मेरे ख्याल से ब्रिटिश लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिक अमेरिका का थोड़ा सा इसमें है। बाकी अब एक बार चेक कर लेना, बोथ आर सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो टेक्निकलिटीज़ में यू डोंट हैव टू गेट इनटू दिस, बिकॉज जब आप हिंदी सीख रहे थे तो आप इतना नहीं सोचते थे। ये चीज़ें आपको सीखने नहीं देती हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इंग्लिश में देना होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा जर्नी टिपिकल डिफ़िकल्ट रहती थी मेरे लिए, बट आपके लिए क्वाइट ईजी होने वाली है। वाई? बिकॉज इंग्लिश इज़ अ बिट कॉमन नाउ, लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू स्पीक हिंग्लिश। तो हिंग्लिश क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सर यू सेड यू वुड टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन, सो प्लीज़। प्रोनाउंसिएशन की जहाँ बात कर रहा था मैं, तो व्हेन आई वाज लर्निंग हाउ टू इम्प्रूव माय प्रोनाउंसिएशन, सो आई यूज़ टू लिसन टू सर्टेन वर्ड्स। अरे यार कभी मैं इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं। इज़ देयर एनी सिनोनिम फॉर सन और मून इन इंग्लिश? अब देखो, डेडपूल आपने जानबूझ के क्यों पूछा है? क्योंकि आपको पता है कि इनके नहीं होते हैं। आपको पता है, आपने कोई ना कोई एक, मेरे ख्याल से कोई शॉर्ट देखा होगा, या मैंने भी ऐसा कुछ देखा है। तो हिंदी में, संस्कृत में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में इस तरह से रहता है, इलनेस। इलनेस तो माई इलनेस इज़ नॉट लेटिंग मी स्पीक। बीमारी जो भी है। सर टेल अस अबाउट इंग्लिश मूवीज़ एंड विच हेल्प अस टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन और चैनल। देखो, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आई नो लिसनिंग और वॉचिंग समथिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट remember that without speaking you cannot improve your communication skills. So whatever that you watch on television or any other source, might be your phone, try to bring that thing into practice by talking to others. So I think Deadpool is trying to pass time. Okay, let's leave it. So I'll be talking about pronunciation then. By the way, your fitness is good, muscular. Okay, yeah, where is my muscles? Okay. No, I'll definitely, I'll be going to the gym very soon, because I have got some injury here, because nowadays I'm pretty much into calisthenics. It's a different kind of workout. Yeah, someone or Chomu, can you told me? Okay, Deadpool, you don't have to simply talk about useless things. Please stick to something. If you are really interested, just be there. Otherwise, you will not get my attention. So I was talking about pronunciation. So pronunciation is uh, pretty much important, as we already know that it can be learnt by watching certain movies. Because watching की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो वॉचिंग में क्या होता है? यू कैन लर्न हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स बाय लुकिंग एट द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ दैट पर्सन, एंड ऑल्सो वन थिंग, you have to notice the lips. How do we do that? So we need to learn that also. So pronunciation is pretty much important. तो उसके लिए आप अब देखो कि किस तरह से कोई pronounce करता है। अब मैं बोल रहा हूँ word, word, अब word भी बोल सकते हैं। देखो, अब pronunciation जब पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ो। फिर ये मत सोचो कि यार ये बंदा ऐसे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, दे विल बी पुलिंग योर लेग बाय सेइंग दैट ब्रिटिश चले गए इसको छोड़ गए, अमेरिकन चले गए इसको छोड़ गए, और बाद में वही लोग आपसे पूछेंगे यार भाई प्रोनाउंसिएशन बड़ा अमेजिंग है, कहाँ से सीखा?
सो फर्स्ट पीपल लाफ एट यू एंड देन दे फॉलो. तो एक एक करके वर्ड आप करते जाओ. When you are watching something, last time I told you that whenever you watch a particular video or you are watching a particular podcast, so there should be a reason behind watching that. I know it will improve your knowledge also, but you need to have a pen and paper in your hand and start writing that pronunciation in Hindi. जो भी आपकी भाषा है उसमें उसको लिखो कि किस तरह से इसने बोला है. तो थोड़ा सा आपको और आइडियाज़ हो जाएगा. तो जब भी आप बोलते हैं तो देन इट विल हेल्प यू. और बार बार देखो कि किस तरह से कोई प्रोनाउंस करता है. अब ये है प्रोनंसिएशन. अब देखो कितने इसमें सिलेबल्स हैं. प्रोनंसिएशन 5 सिलेबल्स, मतलब 5 पार्ट्स में इसको बांट दिया है. तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आप TION देखते हैं जिसको हम बोलते हैं शन, तो ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द प्रायर सिलेबल. मतलब जो भी शन से पहले वाली बात आती है, जैसे कि प्रोनंसिएशन, तो शन से पहले क्या है? ए. तो इसको आपको खींचना है. तो कैसे चलना है? प्रोनंसिएशन. सो प्रोनंसिएशन. सो आई बिलीव यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. समझ आ रहा है भाई जो मैं बोल रहा हूँ? थोड़ा सा फ़नी होता है कुछ लोगों के लिए. सम पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट यार क्या बता रहा है ये सब. बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग दिस, अब 15-16 साल या 12-15 साल पीछे जाके देखोगे तो देन पीपल लाइक यू नो दैट पीपल स्टार्ट लाफिंग, कि लोग हंसने लगते हैं. ब्रो बॉडी काउंट किया होता है यूट्यूब में मिला था, आस्किंग पीपल योर बॉडी काउंट. अरे मैथमेटिक्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन. क्योंकि कई बार मैं क्या करता हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कई बार इधर उधर चला जाता हूँ. तो उस रेलेवेंट चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि मेरा आज मेन मकसद क्या है कि कुछ सीख कर जाएं. क्योंकि अगर मैं इधर उधर की बात करूँगा सो आई वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन पर्टिकुलर थिंग. देखो, इफ़ यू आर वॉचिंग पॉडकास्ट, सो यू मस्ट अपलोड वीडियोज़ रिलेटेड टू प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू stretch sounds. Yeah, I'll do that. I'll definitely make some videos on pronunciation and phonetics also. I'll let you know everything. So first let me work on few things, and once I get time I would definitely go for that. But one thing that I told you कि एक जो मैंने word बताया, किसी भी word के पीछे शन आता है. अब शन की spelling भी कई तरह से है. TION, SION, both have the similar sound. अब जैसे admission, admission, तो बीच में आ रहा है मी और शन जो आ रहा है लास्ट में, तो बीच में आपको स्ट्रेस करना है. एडमिशन, 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 एडमिशन. दिस इज रॉन्ग. तो प्रोनाउंसिएशन सही होगा, देन यू नो दैट इट विल डेफिनेटली क्रिएट एन इम्प्रेशन, एंड द अदर पर्सन गेट्स टू नो दैट दिस पर्सन हैज़ good or sound knowledge of this particular language or English. So I believe you understood this concept, shan wala, TION, SION. So sometime there are 4 syllables, 3, 2, जो भी हो सकते हैं. जैसे presentation, so presentation, presentation. और बाकी जो वर्ड फॉर्मेशन होती है वो भी आपको सीखनी चाहिए. जब भी किसी वर्ड के पीछे शन आता है दैट बिकम्स अ नाउन. सो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट, प्रेजेंटिमेंट, प्रेजेंटली. So there are certain words that you can make, and this is not something that you have to manufacture. They are already there in the books in form of noun, adjective, adverb, and इसकी वजह से भी pronunciation change होता है. Let me be very clear. सर चंदन भाई ने भी आपसे इंग्लिश सीखी है. चंदन, आर यू टॉकिंग अबाउट चंदन? चंदन 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 हु इज इनटू प्लेइंग क्रिकेट? Because I know many students are there, and I know few people with the similar name. So might be you're talking about that guy who used to come and he was from cricketing background. He was struggling at that time because he had a problem in his like with his stammering. No, stammering की problem थी. मैं क्या बोल रहा हूँ? Because he used to stammer a lot. अब stammering भी कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, voice के थ्रू आप change कर सकते हैं. तो एक थोड़ा सा इसमें भी आपको help मिलती है. So that helps. So I don't know whether you are talking about the same person or you're talking about somebody else. तो प्लीज़ गाइज, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो ऑल्सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब. मैंने कई बार बोला प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ और लाइव सेशन. सो सैटरडे संडेज वुड बी देयर. सो एवरी सैटरडे एंड संडे आई विल ट्राई टू डेडिकेट इवन 1 hour or half an hour, whatever
सर योर वीडियो डिलेज ऑन यूट्यूब. अभी भाई समझ नहीं आ रहा है. माई कनेक्शन इज़ क्वाइट गुड बिकॉज माई वाईफाई इज़ वर्किंग फाइन. आई डोंट नो, माइट बी this is with you. Is it with everyone? Are my videos like, is my video lagging somewhere? lag मतलब क्या होता है? डिले, जो धीरे धीरे चलता है ना, lag. Okay, so I think Mohammed Arzalan, there will be a problem from your end, so you had better fix it. अब had better भी यूज़ करते हैं, that is also a modal. तो मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, उसके अंदर भी रहता है. Okay. Okay, just a minute. All are okay, keep continuing sir. Yes, I was talking about pronunciation. तो pronunciation की जहाँ बात, देखो grammar भी, I can discuss grammar, I can discuss different things and vocabulary and everything. But आज अब मुझे चाह रहे हैं कि मैं pronunciation के बारे में बात करूँ, क्योंकि कई बार लोगों को क्या लगता है, this person knows only this thing. So I try to be versatile in that sense. You just said from your end. Can we ever say from your side? No. Side क्या होता है? देखो left और right. We don't have to say that this is from my side. This is very like, ये थोड़ा सा मुझे एक मैं क्या बोलूँ इसके अंदर, थोड़ा सा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला सीन रहता है. ये मेरी तरफ से है, तो तरफ आपको क्या लगता है? साइड. नो, इन इंग्लिश वी ऑलवेज से फ्रॉम माई एंड. That's grammatically correct. And incorrect, a lot of people are using incorrect English also. I don't correct everyone because I don't want to be a custodian of everyone. So I try to correct only those people, those who are associated with me as a student, or my well-wishers, those who want me to speak, or those who want to learn something from me. So I try to correct from my end. From my end. तो ऐसे पंकज इसको आपको बोलना, you don't have to say that. Is this correct? Hey, ABC, this side. No. You can say, hey, ABC, Gaurav here. Directly, you can say that. Like, colloquial use भी होता है. बोलचाल में बहुत सारी चीज़ें common हैं जो चलती हैं. They are not grammatically correct, but still people are using them. तो प्लीज़ इंग्लिश को थोड़ा सा अलग अप्रोच रखनी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम हिंदी. अब हिंदी से इंग्लिश अब सीखते हैं तो देन इट बिकम्स क्वाइट लाइक रेपिटेटिव सी चीज़ें दिखती हैं और एक ही तरह से ट्रांसलेशन होती है. बट व्हेन यू हियर समबडी फ्रॉम द UK, US, सो दे हैव अ डिफरेंट अप्रोच बिकॉज दे आर born with this language and they are native speakers. And if you listen to any native speakers, so they don't translate things. So when you start speaking and you have learned and you have a background of Hindi speaking and all, मेरा भी background था, but I started paying a lot of attention on English to English material, and I know the journey was quite tough at the beginning, but by practice things can become easy. तो धीरे धीरे चीज़ें होने लग जाती हैं. एंड प्लीज़ रिमेंबर दैट बोल चाल में तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, बट यू शुड लर्न समथिंग विच इज़ करेक्ट. And if you are saying this is from my side and other person is able to understand, it's okay. But when you have to speak to somebody who is very much interested in correct grammar, or you are being judged, or you are under the scrutiny, or you are in some kind of interview or somewhere, so I think you had better take care of your grammatical mistakes. So I have heard some of the HRs saying different things. I have been to so many interviews. Because whenever I used to get time earlier, I used to go for interviews, because I used to learn a lot of things from those interviews and I used to impart that knowledge among my students. तो जो भी मैं वहाँ इंटरव्यू से सीखता था, तो जाके मैं जगह जगह इंटरव्यूज़ पे जाता था, एंड आई हैव फ्यू ऑफर लेटर्स ऑल्सो. तो वो चीज़ें मैं आई वॉज टीचिंग दोज थिंग्स टू माई स्टूडेंट. तो कि बिकॉज इफ़ यू आर टीचिंग, यू आर प्रीटी मच confined in a particular room, then how would you learn? So I wanted to explore different territories. So I went to do so many places, because what you need to do, you just need to create or you need to make a resume. अब इसको हम बोलते हैं resume. Pronunciation क्या है? Resume. A lot of people say resume, but resume अगर किसी को समझ आ रहा है और वो कह रहा है ठीक है, तो it's okay. You don't have to correct everyone. In this way, you will be losing your friendship sometime, and people start start staying away from you sometime. It happens.
मेरे साथ तो शुरू में ऐसा होता था, lot of people used to get offended when I used to correct them. So I started learning this art that you don't have to correct everyone. So if somebody is interested in this, so तब तो मैं I can go ahead and correct that person. और अब मेरी भी तो कई बार गलतियाँ होती होंगी, so I always learn from my own mistakes. जब भी मुझे लगता है, because after this session I will definitely go back and listen to the whole video. फिर उसमें से मैं देखता हूँ कि मेरी क्या क्या गलतियाँ थी and what are the things that I can improve upon. So pronunciation में ध्यान रखो कि किस तरह से क्या बोलना है. वाटर नहीं होता, स्कूल होता है, स्कूल नहीं होता. And video, YouTube, Instagram and lot of other things are there. By listening to people you will understand that. Sorry. And another thing is that make sure that you are listening to the right person. And now another question is that how would I understand whether I'm listening to the right person or not? इतनी अंडरस्टैंडिंग तो बनी जाती है आपकी बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद कि who is who and what is the capability of that person. So when you understand that person knows better than the other people, so then you can go ahead and listen to that person. And when you are listening to something, always start making notes or start writing or jotting down those important like वन लाइनर्स जो वो बोलता है, तो वो आप लेकर आओ. एंड व्हेन यू कम अक्रॉस an interesting sentence or a word, so write it then and there and start using that. I know you cannot use all those words in your registers if you have written or in your diaries. So take out 5 or 6 different words and the words that you are not able to use, because जितना आप इंग्लिश में बोलते हैं उसमें भी कुछ वर्ड ऐसे हैं which you use most of the time. तो वो आपके पैट वर्ड बन जाते हैं. वो कैसे बन जाते हैं? क्योंकि आप उनको रोज यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑटो मोड पे चले जाते हैं. फर्स्ट आवर माइंड वर्क्स ऑन मैनुअल मोड. मैनुअल मोड से हम उसको सिखाते हैं. व्हेन वी वर चिल्ड्रन, सो वी वर टॉट इन दैट सेंस. रॉजर दैट. तो इस तरह से आप अपने आप को सिखा सकते हैं. और प्रोनाउंसिएशन के लिए स्टार्ट स्लो एंड स्टार्ट प्रोनाउंसिंग सर्टेन साउंड्स. जैसे मैं कुछ दिन पहले आई वॉज टीचिंग समबडी फ्रॉम I think somewhere in the Middle East. So that person had a problem with the R sound. He was pronouncing like, अगर मैं इसको बोलूँ तो Roger. In British English we do not pronounce. Sometimes we drop R at the end or after the vowel sound. So vowel या vowel जो भी बोल रहे हैं आप, उसके बाद हम ड्रॉप कर देते थे R को. तो ये करते हैं, जैसे CAR बन जाता है खा, टीचर, डॉक्टर एंड वाटर. तो इस तरह से ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं. अमेरिकन क्या बोलते हैं? वाटर, कंप्यूटर. एंड ब्रिटिश दे प्रोनाउंस कंप्यूटर, हैरी पॉटर. सो दे प्रोनाउंस इन अ वेरी डिफरेंट वे. So it is up to you. By watching the different movies and everything, you would be able to learn many things. So start watching Harry Potter series. Why I'm saying that? Because it is British. British English is not that much easy compared to American English. So British is pretty much very limited. When you watch something online or when you're watching videos, so most of the videos are in American accent because they come from Hollywood, and Hollywood is in America. Okay, yeah, that British accent. Water, like टेढ़े मेढ़े मुंह करके भी बोलते हैं यार, पता नहीं क्या है. मुझे बड़ा अजीब सा लगता था when I was working for an American company. So I had to speak in American accent. I went through a lot of different channels. And my first organization that I was working with, that was AT&T. That was from America, and it is based in I don't know whether it is there or not. I used to go to Gurgaon. I was working there. अब तो मेरे ख्याल से गुरुग्राम हो गया है. So now it is different. So guys, the time is running out, and I have got 5 more minutes. If you want me to talk about something, you can go ahead and ask me about that. So next live is going to be tomorrow, somewhere around 10 or 10:30.
So we will discuss about certain words. कल मैं आपको बहुत सारे words का pronunciation बताऊंगा and some of the words which are quite confusing. So I will try to pronounce those words. तो उससे कहीं ना कहीं you will get that uh, like slightest idea how to pronounce that specific word. And remember that when you want to learn or improve your pronunciation, you have to speak slow. 70 to 80 kilometers from my hometown. Okay. So Deadpool, where are you from? Hello, sir. Hello, respected sir. How are you? Priya, I'm good. I hope you are doing good. Not that much good. I'm suffering from cold. That's why my voice is totally different. I don't know whether you are enjoying that or not. क्योंकि थोड़ा सा आज मैं I'm a bit down in energy. नहीं तो चीज़ें कुछ डिफरेंट होती हैं because I'm full of energy most of the time. हरियाणा. Normal. Okay. All right. I'm from Delhi. So I've got some friends from Haryana and Himachal and many other places. We are fan of your voice. Thank you, Priya. Thank you very much indeed. तो थोड़ा सा कोल्ड हो गया है अब पूरी रात आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप आई कुड नॉट स्लीप अ विंक एक पूरा एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूँ आई कुड नॉट स्लीप अ विंक WINK when you say that not able to sleep a wink it means you did not sleep even for a minute आप बिल्कुल भी नहीं सो पाए तो उसको आप क्या बोल सकते हैं आई कुड नॉट स्लीप अ विंक तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं एकदम से माइंड में आया So I believe it is going to help you. कई बार हमें बोलना होता है. Sometimes we have to say that when people ask us and we are not able to sleep properly. तो अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए sleep or wink. No, wing नहीं wink. WINK. K for kilo. K. K for king. No, it's wink Priya. Yes. थोड़ा सा मैं adjust होके बैठ जाऊँ because I have been sitting at the same posture for a very long time. I don't have a lot of problems in that because when I teach, I have to sit for more than 5 hours sometime. I could not sleep a wink. Yes, Priya, you are right on the money. Right on the money मतलब बिल्कुल accurate था. तो right on the money. So Priya, I think you are from Leh. I think you are there. Pleasure. So last time you told me that you are there for 3 months. Am I right? So guys, how many of you have right on the money? Yes, right on the money. So how many of you have told your friends to subscribe to my channel? So this is something I think you can do me a favor by just sharing my channel or by like subscribing to my channel if you haven't done that. So I would really appreciate. Yes, sir. Leh Ladakh. Yes. So Leh Ladakh. Whenever I like see that Leh Ladakh, I start imagining because I really want to go there. Very soon I'll be there. I don't know how soon. Might be it is in the cards. In the cards का मतलब क्या होता है कोई चीज़ जो जल्दी होने वाली है जैसे somebody's my friend's marriage is in the cards और हम ये भी कह सकते हैं at around the corner when something is going to happen so we can say that at around the corner जैसे I think रक्षाबंधन is at around the corner so I believe you are able to understand at around the corner so जब ये combinations करते हैं ना आप so it adds a different light to your speaking or in the brink of yes and the in the brink of we can use there are no so many other words also so guys now I'm going to go could you please tell us about some advanced greeting either tonight tomorrow night especially how is it going and so on advanced greeting in the sense
tonight or tomorrow night, especially how is it going and so on. So there are so many things like this on Instagram and reels and everything. And Pankaj, please understand that. What do you mean by advanced English or something? I always use something which is quite common so that people can relate and people can understand. I know certain other things. So whenever I hear somebody speaking, if I think that person is quite capable of understanding those typical jargons of English, then I can open that box of tricks. Otherwise, I don't want to open any Pandora's box. I don't want to do something which is going to give other person a difficult time in understanding that. So I try to make it quite simple and straight. So there is a term in English, KISS, kiss. So don't take it otherwise. Don't get it. So KISS, kiss. So that is keep it simple and short. So you're looking is gorgeous. Oh, Kolkata boy. Thank you, Kolkata boy. But we use handsome for the boys and men. But it's okay. I have seen a lot of people using gorgeous also. Where I was reading uh, a book. What was that? I was reading a novel. Not novel. I don't know. याद नहीं आ रहा. मेरे कोर्स में था. That was Pride and Prejudice. तो जैन एयर का नॉवल है शायद. तो आई वॉज रीडिंग दैट. उसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में आप पढ़ेंगे मिस्टर बिंगले हैं एंड हिज डॉटर्स. तो मिसेस बिंगले यूज़ करती हैं अपने हस्बैंड के लिए. सो ये वहाँ मैंने देखा था. या कॉज लैंग्वेज इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट वी कैन कम्युनिकेट. Yes, we should not deprive the other person from understanding. Sometimes we want to make our communication skills so complex that अब jargon का मतलब क्या होता है? Jargons का मतलब होता है एक कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंटरेस्ट से जुड़े होते हैं. जैसे कि आप कंप्यूटर फील्ड से हैं तो कंप्यूटर से आपने कोई वर्ड उठाया, या आप लॉ से हैं तो आप चाइल्ड डेलिक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, या फिर एक सुओ मोटो यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कर रहे हैं कई सारे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड से आते हैं. तो उनको हम जार्गन्स कह सकते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं और वो जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें से जो उठकर आते हैं. तो मैं आई ऑलवेज अवॉइड दोज टेक्निकल जार्गन्स सो दैट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड मी. एंड whosoever speaks to me, that person should enjoy listening to me. So that's what I mostly do, because a good speaker is always a good listener and he takes care of his listeners also. So whenever you speak, अब मैं ऐसी इंग्लिश बोलूँ the other person is not able to understand, and that person, अब मुझे ऐसी भी नहीं बोलनी है कि बस पूरी दुनिया को मैं अपने पैरों में गिरा दूँ, देखा मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया है, nobody is able to understand that. So यार फिर इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या? Apparently if somebody said a greeting which is common but not for me, what would I do then? अरे जब आएगा तब देख लेना ना. Why do we make future a past? हम फ्यूचर को पास्ट कैसे बना सकते हैं? अभी तो वो हुआ ही नहीं है. दैट हैजंट हैपेंड येट. तो यही चीज़ें हमें डिप्राइव करती हैं, यही चीज़ें हमें पीछे लेके जाती हैं. बहुत सारे मुझे मिलते हैं, सर इफ़ आई टॉक टू समबडी, अगर मैं किसी से बात करता हूँ और उसको समझ नहीं आया तो, अरे यार उसको समझ नहीं आ रहा तो एक बंदे का नाम बताना जिसका नाम है गौरव सूद, और उसका एक चैनल है GS द इंग्लिश अकेडमी, और उसका एक मोबाइल नंबर भी है. आप वो नंबर उसको दे देना, मैं उसको समझा दूंगा, आप सिर्फ स्पीकिंग का पार्ट करो. सो वाई डू वी टेक द टेंशन ऑफ द अदर पर्सन कि उसको समझ आएगा या नहीं आएगा? इट्स ओके. आप देखो ना आपको कौन सा, कई सारी अच्छी डिक्शनरीज भी आती हैं जो आपको बताती हैं कि कौन से वर्ड ज़्यादा कॉमन है. तो प्लीज़ बिल्कुल बेसिक बोलो, फिर एक कंफर्ट लेवल आएगा, फिर वो फ्लुएंसी आएगी. और उसी, देखो मैं बिल्कुल बेसिक बोलता हूँ और मुझे लोग कहते हैं कि सर आपकी इंग्लिश ऐसी है, वैसी है, वैसी है, ऐसी एडवांस, ऐसे मैं बोलूँ वो बोलूँ. हो जाता है वैसा. डोंट लाफ, ही इज़ वेरी गुड. It's okay. Laughing is good if it is taken as a medicine. Why you got a sharp mind? Why you got a sharp mind? Are you asking me? Oxford Dictionary, good. Oxford Dictionary is okay, but I would rather tell you that you should go for either Longman or Collins, because I have got around 16 to 17 dictionaries at my home. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिक्शनरीज जो लगती हैं वो, मैं वो जो पॉकेट डिक्शनरीज की बात नहीं कर रहा,
I'm talking about fat, big dictionaries. I have Wordsworth, I have Longman, I have Oxford, I have Cambridge, I have NTC. NTC is an American publishing house जिनकी बहुत सारी डिक्शनरीज आती हैं. एंड आई ऑल्सो हैव एक और दो चार राइटर्स और भी होंगे, बट आई डोंट हैव एनी इंडियन राइटर. तो वो मैं अवॉइड इसलिए करता हूँ कि ये नहीं कि आई एम एन एंटी इंडियन. मैं यार हिंदी से ज़्यादा नहीं घुसता मैं. आई डोंट वांट टू लर्न एवरीथिंग इन हिंदी. नहीं तो फिर क्या होता है, एवरीथिंग वट एवर दैट यू लर्न, यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, देन यू बिकम अ ट्रांसलेटिंग इंस्ट्रूमेंट. Bro, I'm not laughing on you, I am laughing on his, sir, way of sponsoring his right class. Okay. All right, because I understood that I can read between the lines. अब read between the lines क्या होता है कि जब कोई कुछ कह रहा है तो उसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग भी पढ़ लेना, समझ लेना, उसको बोलते हैं read between the lines. कई बोलते हैं I can read your lips. बोलते हैं, पता नहीं अब ये सही है या गलत है, मुझे तो नहीं लगता, बट दैट इज़ द वे. ओके. And nobody has to say sorry. Please let this candid talk going on, because you don't have to feel offended if somebody writes something, because it's a democratic platform. I believe in democracy. You can see that. इसको हम बोलते हैं democracy. Democracy नहीं बोलना, democracy. Sir, I have to encounter a lot of foreigners and big shots. Otherwise, I would not. अरे फॉरेनर्स, आई हैव वर्कड फॉर मोर देन 2 years. मैंने ऑलमोस्ट 1.5 year, और ये सब मैंने ब्रिटिश लोगों के साथ बात की है, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है. दे डोंट यूज टेक्निकल वर्ड्स अ लॉट, दे आर क्वाइट सिंपल एंड स्ट्रेट. बाकी जब ऐसी कोई चीज़ मिलती थी, आई यूज टू राइट दैट. बस यही कर सकते हो आप. नो नो, यू डोंट हैव टू बी सॉरी. मैंने तो आपको बस एक समझाया है. बाइट भी मेरे देखो तरीके अलग हो सकते हैं, बट मेरा इंटेंशन एक ही है, दैट यू शुड इम्प्रूव. So your language is very easy. It is very useful for us. Yes, Kolkata boy, you have to speak in that sense, so that other person can relate and other person should enjoy. If I start using those fancy, typical, difficult words, then people would not be able to comprehend whatever that I want to convey. So the way that I explain, so that would be like a, I must say that अब मैं मुश्किल वर्ड सोचूंगा तो मुझे सोचना पड़ेगा, और मैं वो वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, बट यार मुझे समझ नहीं आता कि जब काम एक सिंपल चीज़ से हो जाता है, तो वाई वुड आई गो फॉर दैट जाइगेंटिक वर्ड. वो बड़े से मैं, अब कहीं उसको गैगेंटिक बोल देते हैं, पता नहीं है. जाइगेंटिक तो मैंने बहुत सुना है, ह्यूज, मैमथ, प्रोडिजियस, एलिफेंटाइन, टाइटेनिक. इन सब का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा. वास्ट भी बोल सकते हैं इसको. माउंटेन के सेंस में भी यूज़ हो सकता है, और इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड्स हैं. तो आपको क्या करना चाहिए? If you want to improve your vocabulary, so you can go for synonyms and antonyms. Commodious. तो उन वर्ड से क्या होता है कि आपको बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स मिल जाएंगे. प्लीज़ रिमेंबर, वो जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा, वेदर दे आर क्वाइट कॉमन और नॉट. बिकॉज सर्टन वर्ड्स आर लाइक, कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल डेड होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड. अब एक वर्ड है इंग्लिश में अभोर, ABHORE, बट लॉट ऑफ पीपल डू नॉट यूज़. मैंने आज तक 1 या 2 लोगों को देखा होगा यूज़ करते हुए. नो बडी यूजेज दैट, बट पीपल यूज़. अभोर का मतलब क्या होता है? हेट, टू डिटेस्ट, किसी से बहुत नफरत करना. सो यू कांट सिंपली से दैट आई अभोर यू. द अदर पर्सन वुड बी स्क्रैचिंग हिज हेड, अरे क्या बोल रहा है सर. वाइल स्पीकिंग आई हैव टू टेक मोर पॉज, सजेस्ट मी. Priya, so you should talk a lot. Might be you speak very less, because sometime lack of communication is also a problem. And another thing is that when you are taking pause, it is okay, but let yourself go, and you don't have to think about your pauses all the time. थोड़ा बोलते जाओगे तो धीरे धीरे this thing will definitely better हो जाएगी पहले से. Enormous, yes, yes. मोस्टली को हेट ही पड़ा होता है. यस, सो आई हेट, आई डोंट हेट, आई डिटेस्ट. बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं. यस, इस तरह से काफ़ी सारे और भी वर्ड हो सकते हैं. सो प्लीज़ उनको भी पढ़ें आप. अब आप एक वर्ड को देखेंगे व्हेन यू गूगल इट. अब गूगल भी एक वर्ब है. आई एम गूगलिंग समथिंग, आई एम गूगलिंग सम इन्फॉर्मेशन. कैन आई गूगल योर नेम?
So Google is like when you Google something or when you search something on Google, like search engine, you already know the name. So प्रिया, आपको तो मेरा एक ही सजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो, और पॉजेस ज़्यादा कब होते हैं, व्हेन यू हैव लैक ऑफ स्पीकिंग और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों साथ साथ चलाओ, एंड देन यू विल डेफिनेटली सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर वे ऑफ स्पीकिंग. अब ड्रास्टिक का मतलब क्या होता है? सडन, जो एकदम से देखेंगे आप. यस, डिटेस्ट, malevolent, detest, envy. Yeah, many are there. We don't have to talk about that because अब बहुत सारे आपको SSC और CGL वाले मिल जाएंगे जो सारा दिन आपको रट्टे लगवाते रहते हैं. मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं. So these people are spoon feeding you. स्पून फीड मतलब क्या होता है? चम्मच से मतलब छोटी थोड़ी हर चीज़ खिलाते रहना ऐसे. अब ज़्यादातर आपने स्पीकर्स देखे हैं, स्पीकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट लाइक, मैं किसी को बी लिटिल नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट मेकिंग समबडी फील लेस इम्पॉर्टेंट, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारियाँ करा रहे हैं, इंटरनेट पे पढ़ा रहे हैं, उनमें से 90% ऐसे होते हैं दोज हु आर नॉट एबल टू गो फॉर 5 minutes ऑफ फ्री स्पीकिंग. तो बहुत सारे सामने एक स्क्रीन चलती रहती है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कराते हैं, सामने एक स्क्रीन चलती रहती है, यहाँ पर वो बैठे होते हैं, सारे वर्ड सामने होते हैं और उन्हीं को रोज़ रोज़ करना होता है. और बाकी सारे जो हैं इसके अंदर देयर आर मैनी अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक इसमें वर्ड रूट्स होते हैं, वो सारे रट्टे मार लेते हैं. बस यही होता है. SSC CGL में करते क्या है? रटते हैं बस सारे लोग. एक्चुअली आई एम वन ऑफ देम. वो खैब रट्टाबाज. देखो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी. जो भी वोकेबलरी के रट्टे मारते हैं ना, उनको एक बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम हो जाती है. वो बेमतलब के बेतुके वर्ड्स यूज़ करते हैं और कहीं भी स्पेस नहीं देते सामने वाले को समझने का. अब जैसे मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा और कहीं ना कहीं आपको एक स्पेस दूंगा, like I love to meet people. I love to meet people. I go and visit different friends and relatives. I really love going out. I'm a very gregarious person. I love to be in that social circle. So gregarious का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मैं बाहर जाना पसंद करता हूँ, लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सोशलाइज होता हूँ. तो ग्रेगेरियस का मतलब क्या है? सोशिएबल. सोशिएबल क्या होता है? जो सबसे मिलता जुलता है. तो ग्रेगेरियस अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो कईयों को समझ ही नहीं आएगा. तो जब मुझे ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं ग्रेगेरियस यूज़ कर लेता हूँ. अदरवाइज एक्सट्रोवर्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. एक्सट्रोवर्ट इज़ लाइक वन, एक्सट्रो और वर्ड से बन रहा है. तो एक्सट्रोवर्ट वन हु डज नॉट होल्ड एनीथिंग इनसाइड, जो बता देता है सब कुछ, एक्सप्रेस कर देता है बहुत ज़्यादा. और इंट्रोवर्ट हु कीप्स इनसाइड. एंड अब एम्बीवर्ट एक और भी वर्ड है इसका, एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. एमिएबल, यस यस. तो अब इस तरह से बहुत सारे वर्ड और भी निकल आते हैं. अब जिन्होंने रट्टे मार रखे हैं वो तो भर भर के लाएंगे. एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट. फिर एक वो वर्ड बुक, एक बुक आती है, मैंने कहीं कहीं पढ़ी होगी, वर्ड पावर, नॉर्मल लुइस के नाम से आती है. फिर उसके रट्टे मारो, कैसे ईगो, ईगोइस्ट, ईगोमैनिकल, ऑल्ट ईगो, बहुत सारे हैं. फिर वो डॉक्टर्स पढ़ने लग जाओ आप, लाइक साइकियाट्रिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑफ्थेमोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट एंड बहुत सारे और भी आएंगे. वर्ड पावर मेड इजी. अब मेड इजी नहीं, मेड डिफ़िकल्ट होना चाहिए इसका नाम. सो ये मिसनॉमर है एक. व्हाट शुड आई लिसन एग्जैक्टली फॉर इम्प्रूविंग. देखो, अब छोटे छोटे जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब आपको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी ढूंढो आप, वेयर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड देम लाइक बहुत अच्छे से. तो आप उनको पढ़ना और सुनना शुरू करें. अब स्टोरी बुक्स ले सकते हैं. यू कैन बाय सम ऑफ द स्टोरी बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो जब उससे हम पढ़ते हैं कुछ और ऐसा कुछ सुनते हैं, एंड व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट गिव्स अस सम सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक ऐसा सेंस भी देता है हमें कि हाँ, हमें समझ आ रहा है, आई एम इम्प्रूविंग, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वर्ड्स. तो जब आपको ज़्यादा समझ आता है तो एक अंदर से एक इम्प्रूवमेंट सा दिखता है कि नाउ आई एम केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ. What should I listen exactly for improving? Like you should find your own interest. If you are interested in Bollywood or Hollywood or anything like this or in sports, तो उससे related कुछ देखना शुरू करो पहले. Start from your own likings. उसके बाद you can listen to anything. Nowadays there is a trend going on. A lot of people are going for podcasts. Even I have some of my friends, those who are starting their podcast very soon. मैं भी एक podcaster ही बनना चाहता था. I wanted to be a podcaster, but पता नहीं, अब देखते हैं कभी ऐसा कुछ हुआ तो. अरे भाई, डोंट मेक इट अ वोकेबलरी वीडियो. मैंने बहुत पढ़ा है वोकेबलरी, बड़ा मत था, मैंने बहुत सर दर्द करा हुआ है.
इसके पीछे. So I don't want to get into this क्योंकि ये आपको that will not let you speak freely. Yes, full रट्टा. रट्टे तो मैंने देखो मारे नहीं है ज़्यादा वैसे, बट मैंने समझने की कोशिश ज़्यादा की है कि so that I would be able to use them. I have only watched movies and series. Yeah, whatever that you enjoy watching. If you are able to watch and understand something, so you should go for it. No hard and fast rules. Learning English is not a rocket science. भाई क्या करें, जॉब लेनी, अरे ले लेना भाई जॉब, और जब जॉब लग जाए so you can send something like a box of sweets. तो अब यार थोड़ा like now it's time to go. अब जाने का टाइम हो गया है. सो आई वॉन्ट टू गो अवे, आई वॉन्ट टू ईट समथिंग. सो आई एम नॉट ट्राइंग टू बी, क्या कहते हैं उसको, बस समझ नहीं आ रहा है, वर्ड नहीं आ रहा है. सो फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट वाली आपको फीलिंग आएगी, बट प्लीज़ बी देयर टुमारो. आई विल डेफिनेटली बी देयर. Please don't. No, I have to go because I have to eat something. Otherwise, I'm very hungry right now. तो अभी कुछ भी नहीं खाया मैंने. I have eaten only one burger and one cup of coffee from McDonald's. सुबह से यही करा है बस. यही दो चीज़ें हैं. So just because of them, I'm able to speak. पापी पेट का सवाल है. Yes, पेट is always पापी. पापी को बोलते हैं sinner और पाप होता है sin. SINNER, sinner. So और साल्वेशन होता है जब आप सारे पाप धो के आप बिल्कुल मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो वो साल्वेशन होता है. तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द वोकैबुलरी अगेन बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली एंजॉय कई बार. So a lot of people when I teach in my class, so they simply take their notebooks out and they have their pen in their hand, they start writing whatever the words that come out of my mouth, so they start writing that. And I don't want to get into this again. As I said that I'm really hungry, I want to drink a glass of water, a bottle of water, because it is a bottle exactly. So now it's time to say goodbye. That's it for today, and thanks for joining. I will definitely be there tomorrow around 10 or 10:30. So be there, and please make sure that you will subscribe to the channel and you will share that channel among your friends. That's it for today, and thank you Kaushal, thank you Deadpool, thank you Priya, and thank you all other people, those who have tolerated me for that long. Yeah, thank you Kolkata boy. Sir, please do. What do you mean by two? और हाँ, किसी का प्रेजेंट परफेक्ट रह गया, मैं कल बताऊँगा. कल बिल्कुल मैं प्रेजेंट परफेक्ट बताऊँगा आपको. थैंक यू फॉर योर सजेशन सर, रियली अप्रिशिएट दैट. Pleasure is all mine. So now it's time to say goodbye. Sayonara. See you tomorrow.